Hello, Namaskar, Ram Ram, Pranam. Thank you for joining me today on this new episode of Being the Change. Today we are going to talk about the importance of choosing yourself. By choosing yourself, it doesn't mean that you have to be selfish. More often than not in life, in today's scenario, we tend to ignore ourselves while performing our duties to our related to like society, family, friends, country. We ignore ourselves. We tend to forget our own self, own being, which is totally wrong, which is not good for your, not only for you, but also to those people who are dependent on you, who are related to you. In the long run, it won't be beneficial to either of you. So, बहुत बार जब हम खुद को भूल जाते हैं लाइफ में, तो खुद के बारे में सोचने से पहले हमें लगता है कि यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो जाऊंगा. सो इन relation to being selfish and choosing yourself, I just want to say that these two are totally different things. By choosing yourself, I do not mean at all that being selfish. You do not have to be selfish. Choosing yourself is all about your own self respect, your own respect, right? So, choosing yourself means you are choosing your respect. And there are generally four tracks related to a personality, if I have to say, like physical, mental, emotional, and spiritual. So, as per my understanding, these are four aspects related to a personal being, and you have to take care of all of them. चारों एस्पेक्ट पर हमें काम करना है, and you have to like say improve 1% on regular basis in each of these following uh, aspects. Right? Just now I said that, I mentioned that. बट यहाँ पर 1% इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल मेजर करना है, बिकॉज देयर इज नो मैथमेटिक्स और नो मेथड टू मेजर एक्चुअल 1% इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ एंड ऑल दैट. By improving 1%, I just want to say that I just want to convey to you that you have to be consistent in your progress. डेली थोड़ा थोड़ा इन चारों एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको करते रहना है. सो लेट्स बिगिन. Let's talk about the first aspect, that is physical aspect, physical track on the journey of choosing yourself. फिजिकल एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाके डंबल ही उठाना है. By choosing yourself in the physical aspect, I do not mean that you have to go to the gym and you have to do lift heavy weights and do all those push-ups and chin-ups and squats and all that. If you are doing that, that's brilliant. But if you are not in that category, if you do not have that much time to go to the gym, or you cannot even afford that, so you just have to take care of your own being by giving to yourself physically 15 to 20 minutes. That's it. In those 15-20 minutes, you can go for a little walk, go for a running, do some yoga, or do some basic exercises at home. That's totally dependent on you. 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए, अपने फिजिकल एस्पेक्ट पर काम कीजिए. इवन इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्लीपिंग पैटर्न्स. कई बार क्या होता है कि प्रेशर इतना है, वर्कलोड इतना है, हम अपना स्लीपिंग पैटर्न ही भूल जाते हैं. हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो कब का खराब हो चुका है. लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, या कभी सोते ही नहीं है. दिस इज नॉट गुड. एक्सेप्शन केसेस ठीक है, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस दिस इज नॉट गुड. इट मे लीड टू एंजाइटी इश्यूज एज वेल, राइट? सो अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखेंगे, आप फिजिकल एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं. सेम अगर लाइक लेट्स से you decide to eat healthy on regular basis from now on, तो वो भी एक फिजिकल एस्पेक्ट पर बहुत अच्छा काम होगा. ईटिंग हेल्दी बहुत कम लोग करते हैं, राइट? सो सिंपल छोटी टेक्निक है, बट अगर आप वो भी करते हैं, आप अपने लिए अच्छा करेंगे. यू आर चूजिंग योरसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट, that is emotional, which is very much important to all of us. If I talk about my own self, by choosing myself on the emotional aspect, on the emotional level, I have done one thing, or I have applied one thing, one strategy in my life, which you can opt to. Like, I do not entertain any people who tend to influence me in a negative way, or I do not talk to those people who I do not like. Simple.
सो जो भी आपको नेगेटिव पीपल लगते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ऊपर, या जो आपको पसंद नहीं है, दूर रहिए। बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस, क्या मैं लोगों की हेल्प नहीं करूंगा? नो, आई डू नॉट मीन दैट। जहां आपको हेल्प करना है, किसी का सपोर्ट करना है, जो भी आपसे बनता है, डू दैट, करिए। बट अगेन देयर इज अ सेइंग लाइक, बिफोर हेल्पिंग अदर्स यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ, राइट? लाइक प्लेन में जाते हैं, जनरली क्या कहा जाता है? फर्स्ट पुट ऑन योर ओन मास्क इवन बिफोर यू पुट इट ऑन ए बेबी। किसी बच्चे के मुंह पर भी मास्क लगाने से पहले खुद का लगा लीजिए भाई, तभी उस बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। while the plane is going down, you have to take care of your own self first, then only you will be able to help others. So in my life I am the only plane, क्योंकि बाकी सब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। लाइक सब आपको भी यही लगता होगा, राइट? आपको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे आसपास घूम रही है, तो पूरी दुनिया का तो पता नहीं, बट एटलीस्ट सम पीपल आर देयर हु आर डिपेंडेंट ऑन यू। सो आपको अपना प्लेन खुद अच्छे से चलाना है, राइट? When you are taking care of yourself, when you are emotionally and mentally at peace with yourself, when you are taking like, when you are observing self care or self love rules or techniques, when you are loving yourself, when you are in a positive strong bonding with yourself, then only you will be able to radiate love outside, then only you will be able to help others, guide others, serve others, and do everything whatever you want. But the first thing, be conscious about your emotional well-being as well. Now, while doing all these things, like on the emotional, physical, mental, spiritual aspects levels, like I do not mean that you will be happy. You do not have to be happy at each and every particular point of time. But my point is that while doing all these things, you will feel good. गुड से आप हैप्पी की तरफ जा सकते हैं, नहीं भी गए कोई बात नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। बट माई पॉइंट इज दैट इफ यू आर फीलिंग गुड ऑन रेगुलर बेसिस, इफ यू आर डूइंग सम लिटिल थिंग्स विच आर beneficial for you, which will be healthy and meaningful for you in the longer run of your life, you need to take care of all those things. It will be beneficial, and it will make you strong. It will help you boost your energy inside, and then you will radiate that energy outside, right? So moving on to the third aspect, like mental one. I tried to focus on this aspect few years ago, like when I was writing my first novel, Should I Hate or Love, तब मुझे ये चीज समझ में आई। लाइक जब हम बच्चे होते हैं, जनरली एक साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि ऑन एन एवरेज ए किड और चाइल्ड लास्ट अराउंड 300 टाइम्स अ डे। व्हाट अबाउट अस ग्रोन अप्स, सो कॉल्ड एडल्ट्स? मुश्किल से 5-6 बार। मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स ए प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी और रिसर्च, समथिंग लाइक दैट। सेम रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जब हम बच्चे होते थे, जैसे ज्यादा हंसते थे, तो ऐसे ही हम बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज भी करते थे जो आजकल नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते थे, जो किसी को लगता था अच्छा है, बहुत बढ़िया किया, किसी को लगता था क्या तोड़फोड़ मचा दिया। बट वी वर यूज टू बी वेरी मच क्रिएटिव, जो आजकल नहीं है। सो ऑन द क्रिएटिव एस्पेक्ट हमें क्या करना चाहिए? ब्रेनस्टॉर्म, राइटिंग, जनरल राइटिंग और पोएट्री, पेंटिंग, anything you can do, anything. Just be creative on regular basis, consistent basis. Brainstorming, planning for your career, planning for your family, planning for your future, best thing. Generally मैं क्या करता हूँ? I pick up a theme, brainstorm about that, and try to find solutions or try to find 10 beautiful new exciting ideas on regular basis. ऐसा नहीं है कि let's say मैंने रिलायंस के बारे में कुछ सुना, उसके बारे में रिसर्च किया, आई हैव फाइंड सम ब्यूटीफुल सजेशंस फॉर देम। ऐसा नहीं है मैं अंबानी को जाके बताऊंगा, उसको जरूरत भी नहीं होगी, शायद खुद उसके माइंड में वो आइडियाज आ जाएंगे। रिलायंस मेरी कंपनी नहीं है, बट आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ बाई डूइंग दिस क्रिएटिविटी एक्सरसाइज डेली ऑन रेगुलर बेसिस, राइट? बिकॉज इन फ्यूचर अगर मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहूँ, अपनी नॉवल से रिलेटेड कुछ करना चाहूँ, मैं अपना क्रिएटिव मसल रेगुलर यूज कर रहा हूँ, आइडिया मसल रेगुलर यूज कर रहा हूँ, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई विल बी नीडिंग इट, ये मुझे अच्छा और बढ़िया सजेशन दे देगी, राइट?
जैसे हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, बॉडी को, आउटर बॉडी को ट्यून करने के लिए हम जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं एंड ऑल दैट. सो सेम गोज फॉर मेंटल लेवल. Reading is a brilliant exercise. A research shows and proved in US and Canada and North America part that almost two-thirds, even more than that, people ignore reading after their graduation. गलत चीज है ना. ग्रेजुएशन हो गया या जॉब मिल गया तो लोगों का, अपने इंडिया में भी क्या है, जॉब मिल जाए उसके बाद तो मैं न्यूज़पेपर भी टच नहीं करूंगा. डू नॉट डू दैट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एंड रीड ईच एंड एवरी अदर मैगजीन और न्यूज़पेपर, बट एटलीस्ट यू कैन रीड some good books. You can read 5-6 books a year. Actually, when I started this exercise, reading exercise few years back, in the initial year, in the whole year, I just read 5 or 6 books. In the next year, I read 11 books. I promised to myself that I'll read 12, but unfortunately, I fell short by one. I read 11 books. But in the third year, while performing this, all these exercises, in the third year, I read 53 books in the single year. और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहा, बाकी काम भी थे. लाइक आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम, टीचिंग करना या जो भी करना. आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेकेंड नॉवल, दूसरी नॉवल लिखना, फर्स्ट का प्रमोशन करना एंड ऑल दैट, वो सब साथ चल रहा था. ठीक है. एट दैट टाइम आई रेड, आई कंप्लीटेड, आई फिनिश्ड 53 good excellent books. So you can apply any of these techniques for yourself. जो मेरे लिए काम करता है जरूरी नहीं आपके लिए भी करे, but at least you can try different strategies and find out which one is best for you. Moving on to the spiritual aspect, I do not mean that you have to be religious. धार्मिक होना, religious होना is a totally different thing. By being spiritual, I mean आध्यात्मिक. आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों अलग चीजें हैं. अगर आपको धर्म में विश्वास नहीं है, यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, इट्स टोटली फाइन, बट स्टिल यू कैन बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, यू कैन बी एन आध्यात्मिक पर्सन, राइट. सो यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव राइट नाउ. भगवान में मानते हैं नहीं मानते, किसी भी धर्म के हैं, इट डजंट मैटर, राइट. Just be grateful for whatever you have, for your family, for your friends, for your finances, for your health, for your fitness, for your education. And बहुत कुछ है यार. Just be grateful for that. And you can, like, कभी सुना है आपने mindfulness, being present in the moment, in the now. So you try and practice that exercise. It's not actually exercise. It's a unique thing. Just being present. And it is known as mindfulness. कभी अलग से इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, but try that. It's wonderful. Like just take a few simple breathing exercises. Do those on regular basis 4-5 times a day. It will take only 1-2 minutes per exercise. That's it. And starting from here, you will be continue to grow. आप ग्रो करने लग जाएंगे स्पिरिचुअल लेवल पर. धर्म से लेना देना नहीं है, बट जस्ट बाय फॉलोइंग माइंडफुलनेस, जस्ट बाय बीइंग कॉन्शियस इनफ फॉर योर बीइंग एंड जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू आर हैविंग इन योर लाइफ, आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ग्रो करते रहेंगे अपना. लाइक स्पिरिचुअलिटी से अपोजिट हम जब जाते हैं, इट टेंड टू लाइक फोर्स अस इनटू डार्कनेस. If I say like बहुत anxiety issues होते हैं, revengeful या regretful mood रहते हैं. Why? In case of anxiety issues, like we sort of time travel to the future. Oh God, it might happen 6 months now, from 6 months now or 6 weeks. 6 महीने 6 हफ्ते बाद क्या होगा, अभी क्यों सोच रहे हो यार? No one can predict future. No one. Right? And same goes for regret. We tend to like we sort of time travel to the past. Oh gosh, why did I talk to that person? Why did I trust that person? अबे भाई हो गया जो होना था, move on. Anxiety or regretfulness or revengeful vengeance, all these negative things, negative emotions are just robbing you of your current energy, robbing you
of your energy right now. But all the four aspects and some beautiful techniques, some easy techniques that I talked about, they are providing your energy right now. They are boosting you, right? So जो चीजें आपकी एनर्जी चुरा रही हैं उनको छोड़कर जो आपको एनर्जी दे रही हैं, focus on all those aspects, right? So at the end, by concluding, I just want to say that चारों एस्पेक्ट्स पर काम कीजिए, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें कीजिए, लोगों को इग्नोर कीजिए जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, जो आपको इमोशनली लाइक हार्म करते हैं, स्कार्स देते हैं. एंड थर्ड, क्रिएटिव आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग, जर्नल राइटिंग, पोएट्री, पेंटिंग, कुछ भी वो सब करते रहिए, रीडिंग करते रहिए. एंड moving on to the last aspect, just be grateful for whatever you are having in your life, just enjoy. And before concluding, I just want to say one thing at the end, like before looking outside, or forget about before, just instead of looking outside or instead of looking at the outer world, focus on your inner world, focus on the inside. Take care of your own self. अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, if you are not in love with yourself, if you are not taking care of yourself, I am afraid you won't be able to take care of others in the longer run, right? अभी आप किसी से प्यार कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, बट अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं. at some sort of time, some point of time, you will start feeling demotivated, you will be irritated. So वो सब ना हो, खुद का ध्यान रखिए. खुद का ध्यान रखेंगे तभी सबका ध्यान रखेंगे. सो लेट्स डू टुगेदर. खुद का ध्यान रखेंगे बाय चूजिंग आवरसेल्फ, राइट? थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन दिस ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ बीइंग द चेंज. नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मिलते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर चूजिंग योरसेल्फ. थैंक यू.